Hello and welcome. I am Vishwajit Singh Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. Today we solving numericals of exercise 1A of real numbers chapter. Insert 16 rational numbers between 2.1 and 2.2. हाँ, x is equal to 2.1 and y is equal to 2.2. हम ग्रेटर वैल्यू को y लेते and n is equal to 16 and हम इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं देन y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 y माइनस एक्स 2.2 माइनस 2.1 अपॉन 16 प्लस 1 and 0.1 upon 17. Okay. X plus D. X plus 2D. X plus 3D. And comma dash dash dash. X plus 15D. X plus 16D. इस टाइप से हमारे क्या है 16 रेशनल नंबर्स होंगे इस न्यूमेरिकल्स की। अब हम वैल्यू कीप करेंगे x is equal to 2.1 plus and d 0.1 by 17. अब next 2.1 plus 2d mean क्या 2 into 0.1 then 0.2 by 17. 2.1 plus 0.3 by 17 and comma dash 2.1 plus 15 into d then 1.5. 2.1 plus 1.5 by 17. 16d 16 into 0.1 1.6 by 17. अब इसके आफ्टर जब हम यहाँ पे 1 लेकर एलसीएम लेंगे देन 17 and 35.7 plus 0.1. Taking LCM 17 and 35.7 plus 0.2. Taking LCM 35.7 plus 0.3. That is 35.7 plus 1.5. 35.7 plus 1.6. 35.7 plus 0.1 becomes 35.8 upon 17. 35.7 plus 0.2, 0.9.
17 and 17, 35.7 plus 0.3. Then after addition 36.0 comma dash dash 35.7 plus 1.5 37.2 upon 17. 35.7 plus 1.6 37.3 upon 17. ओके देश आएगा। ओके अब इससे ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हमें पैटर्न पता चल गया। 0.8, 0.9, 36.0 एंड इसके आफ्टर 36.1. So our answer is 35.8 by 17. 35.8 यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव कर देंगे, देन 0, यहाँ से भी 170 36 0 upon 170 comma 361 170 362 by 170 363 by 170. Okay, this is sufficient and that dash 37.2 यहाँ से डेसिमल को रिमूव करेंगे and 372 by 170 and यहाँ से भी हम डेसिमल को रिमूव करेंगे then 373 upon 70 170. Okay, this 170 ये हो जाएगा. So these are the 16 required rational numbers between 2.1 and 2.2. If you like the video, so please like, share and subscribe the channel and press bell icon button for more updates. Thank you and bye bye.